I always have a pen and a paper and a copy around. Although I have several note-taking apps on my iPad, etc. on my system, still the pleasure of pen and paper just don't seem to fade away because I'm a big fan of writing things down as and when any positive, any negative feedback my mind gives to me. On the same note, today in this video, we are gonna understand not any technique because I'm not a fan of technique with 369 method, ye method, wo method, although I know all of that. I can teach you everything, whatever you tell me. Rather, today I'm gonna tell you कि manifestation or maybe these techniques rather are not manifestation. ये नहीं है कि ये formulas हैं, इनको crack करना है. Formula कुछ और है. ये जो technique है ये सिर्फ एक तरीका है वहाँ तक पहुँचने का. ज़रूरी नहीं है कि किसी technique को consistently follow नहीं करोगे तो manifest नहीं कर पाओगे. Right? तो बहुत सारे लोग हैं जो comment section में देख रही हूँ कि ये technique बता दो, वो टेक्निक बता दो. I never see it as magic. I just see it as, a goal. I never see it as a technique or a tool की or a formula कि नहीं 369 नहीं आया तो भैया manifestation नहीं हो पाएगा. Nothing like that. Today, if you have certain myths like that, I'm gonna burst that myth, and most importantly, I'm gonna tell you कि manifestation is not just about techniques. Techniques are just the tools to help you manifest better. Manifestation पर हमको command करना है और उसके लिए स्टार्टिंग में बिगिनर्स को assumption में प्रॉब्लम होती है. They cannot believe in their desires. They cannot believe in them achieving their desires. They cannot believe in the assumption law. They can't believe that they can get it or they already are that. और उस लिए तमाम तरीके के branches of techniques have been invented. रोज कुछ ना कुछ आ रहा है. दोस्तों, if you're already liking this content, I just request you a single like from you, and if you love it really to the next level, you can share it across with your network and also hit the subscribe button and become a part of our family. Alright, so one more thing, if you really want to learn any technique, if you're a big fan or you have not understood it somewhere else, you can just put it down in the comments कि कौन सा टेक्निक आप जानना चाहते हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है. Now let's come into the theme of the video. तो देखो यार, क्या होता है कि मुझे कोई मटीरियलिस्टिक या फिर साइकोलॉजिकल, फॉर एग्जांपल मुझे अपना माइंडसेट इन्हांस करना है, मुझे बड़ा सोचना है, या फिर मुझे कुछ मटीरियलिस्टिक अचीव करना है, एक्वायर करना है, खरीदना है, तो मैं एक एम तक जाना चाहती हूँ. राइट. उसके लिए मैं मैनिफेस्टेशन यूज़ करना चाहती हूँ. तो सिंपल कोर ऑफ मैनिफेस्टेशन, कितनी भी किताबें पढ़ लो, वीडियो देख लो, कुछ भी दुनिया भर की तमाम टेक्निक कर लो, कोर मैनिफेस्टेशन का किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाने का ये है, जब तक आप खुद को उस एम तक पहुंच जाने के काबिल नहीं समझते हो तब तक आप उसको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. अभी अगर आप सोचते हो, सिंपल टर्म्स में समझाती हूँ जो सबको समझ में आता है, पैसा. अगर अभी तुम सोचते हो कि तुम 1 करोड़ रुपए 1 साल का कमाने के काबिल हो, तो वो तुम्हारे लिए आसान है, तुम्हारे लिए कोई बिग डील नहीं है. इट्स ऑफ द पेडेस्टल. अगर तुमको लगता है कि मैं 15 लाख रुपए महीने कमाने के काबिल अभी नहीं हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है वो, तो उस चीज़ तक पहुंचना मुश्किल है. क्योंकि मैनिफेस्टेशन कहता है कि कोई चीज़ ज़िंदगी में तब आ जाएगी जब उस चीज़ को अज्यूम कर चुके हो. मतलब कि तुम उसको अपने काबिल मान ही चुके हो. ये तो बहुत आसान है, ये तो हो ही जाएगा आज नहीं तो कल. Rather, I consider myself worthy enough to be earning 15 lakh with whatever business I'm doing. Or maybe for somebody it's 1 crore a month. For somebody it's a 15 lakh per annum job. For somebody it's 15 lakh per month. So you are vibrating at a particular frequency right now, and to have something else, something unique, something bigger, you need to jump to that frequency, right? तो ये एक मैनिफेस्टेशन की दुनिया में, फ्रीक्वेंसी की दुनिया की बात हो गई. ग्राउंड रियलिटी यही थी कि you believe something that yeah, this is okay for me, this is not a big deal, okay, cool, it's fine, it's all right. Then only you tend to take action towards it. Otherwise, till the time you have insecurity, you have fear, you consider it different from you, you consider it far away, you are nowhere around manifesting it. Now, Agrika, what's the role of these multiple techniques and tools and sub techniques? Well, they have just one aim कि वो वहाँ तक, कहाँ तक, मैनिफेस्टेशन तक नहीं, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने तक नहीं, उस मैनिफेस्टेशन की फीलिंग तक आपको पहुंचा सके. नहीं समझ में आया? तो वो टेक्निक्स आपको मैनिफेस्ट करके नहीं देगी, वो तो आप खुद ही करोगे. अब क्या हुआ कि फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज आई अर्न 15 लाख रुपीज अ मंथ, और मे बी लेट्स सपोज आई अर्न अराउंड 10 लाख रुपीज अ मंथ, एंड आई थिंक आई नीड टू जंप टू मे बी 20 लाख रुपीज अ मंथ, 25 लाख रुपीज अ मंथ, कुछ भी बता रही हूँ, ठीक है, रैंडम एग्जाम्पल. आई विल नॉट अज्यूम इट विल बी वेरी टफ फॉर मी. मुझे बहुत दूर का लगेगा, वो बहुत दूर का लगेगा.
मुश्किल से मैंने 10 लाख रुपीज़ पर मंथ पाई, लेट्स सपोज, आप अपने लिए सोच सकते हो. या फिर लेट्स सपोज आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने कमिंग अप एंड आई फील लाइक आई नीड टू हैव अ कोरियन ग्लास स्किन. ठीक है, सब्लिमिनल्स बहुत सारे इसके चलते हैं ना. तो आई विल नॉट गेट देयर ओवरनाइट, और रादर मेरे को शायद 2-3-4 महीने, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा. आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू consider myself worthy of it. These manifestation techniques, for instance, let's take example of 369. तो 369 में होता क्या है? 3 times you write the same thing in the present tense. For example, I am already earning 20 lakh rupees a month in the morning. 3 times. Now morning means what? नाश्ता वाश्ता करके नहीं. When your brain is already in a dizzy zone with theta, अल्फा बीटा थीटा फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ब्रेन वेव्स होती हैं, जिसमें आप ऑलरेडी डिजी होते हो, जैसे उठते हो थोड़ा टाइम शांत रहता है, फिर उसके बाद से सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती हैं, फिर आप डिबेट होने लग जाते हो लोगों से बात कर करके, अपने काम के बारे में सोच सोच करके, अपनी परेशानियों के बारे में सोच. उसके पहले एज यू गेट अप, एज यू गेट अवेक, 3 times you write that. ठीक है, तो माइंड ने एक्सेप्ट किया. टेक्निक क्या है? 369 किस काम आई? बस उस रास्ते में एक टूल की तरह काम आई. डेस्टिनेशन नहीं थी वो टेक्निक, उसने बस हेल्प करी आप. सिमिलरली लेट्स सपोज नेक्स्ट 6 होता है, 6 times इन द नून, बिकॉज नून में बहुत, नून तक आते आते हम अपने डिज़ायर को भूल ही चुके होते हैं, तो वो वापस से रीइंफोर्स कर रहा है. 6 times आपको वही सेम चीज़ लिखनी होती है. Then 9 times while you are about to sleep. Why? Because you are actually reinforcing the same stuff, the last thing that you're telling to your mind before you sleep, because mind is active even while it's sleeping. Only the body is not active. So 9 times then. So basically 369 did what? Just like any other technique out there, 369 also played its part just in helping you assume that you are worthy of it faster. आप किसी एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स आप बोलते हो कि यार मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, मुझे लग रहा है मुझे बीमारी हो गई, मुझे पेट में दर्द रहता है, मुझे लग रहा है बीमारी हो गई. आपको बीमारी हो जाएगी. मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम अर्निंग, आई एम फाइन, एवरीथिंग इज सो गुड अराउंड मी, आई हैव गुड पीपल. द पॉजिटिव words have positive words, positive thoughts have a positive impact. करके देखो है, राइट? वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है. कुछ लोगों के घर में एनर्जी होती है ना, एकदम बस उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जबकि पैसे बहुत होंगे अकाउंट में, लेकिन उल्टा सीधा बोलते रहते हैं. बट देन देयर आर पीपल हु हैव लेस, बट देन देयर ऑरा इज दैट दे आर हैप्पी, दे आर पॉजिटिव. सो अल्टीमेटली इट्स नॉट जस्ट द अमाउंट दैट विल यू लीव बिहाइंड एंड डाई इन योर बैंक अकाउंट, रादर हाउ वेल you lived, how well you helped your family live, how well you helped your other people live. So that experience counts. ऊपर तो किसी को कुछ भी नहीं ले जाना है, right? At the end, on your deathbed, it's the experiences that match. So coming back to the topic, all these techniques actually, इसके ऊपर इतना ज़्यादा obsess मत हो. ये techniques are just way to help you assume. Now that I am not a beginner, I'm in the middle of being able to manifest better, being able to manifest की जगह पे मैं ये बोलूँगी कि being able to achieve things faster. तो I don't use these techniques anymore. Whenever I get time, I just write things down and I visualize things, so that the more I repeat, writing things down or assuming or conducting myself in a way that I have that desire, the more my mind I just fake it till I make it. The more my mind becomes ready and aware, and the pattern of thinking changes, and I begin to feeling that way, and that's it. After a certain point of time, I will believe it to the point that I'll no longer need to just 369. No, I already know that yeah, it's okay, I don't worry about it. जब पता है कोई चीज़ तुम्हारी है तो तुम क्या उसके बारे में चिंता करते हो? तुम्हारे पास एक चीज़ पर्टिकुलरली है तो तुम उसके बारे में सोचते हो ज़्यादा? नहीं, you already know it's there. अब नहीं है, वही तो आर्ट था, वहाँ से दिमाग हटाने का. कहने का मतलब तुम किसी चीज़ के पीछे पड़ो. ये सेम चीज़ रिलेशनशिप में भी अप्लाई होती है. तुम किसी चीज़ के एकदम पीछे पड़ते जाओ, वो चीज़ तुम्हारे सामने नहीं आएगी. When you assume that yeah, it's already mine, he's already mine, she's already mine, etc. You reflect an energy, you radiate an energy which is not of catching things, of running after things, of running after people, of running after desires, of running after money. You just know, you're confident enough that it is yours, and eventually it will show up. So yeah, concluding the part, not making video very long, just remember that manifestation techniques, if you're not able to follow something, do not obsess over it, because be okay, relax, because it was just a way, it was just a tool to help you assume that you are worthy of your desire. You can use a combination of things. You can not use anything at all. You can curate a technique of your own. For instance, मैंने कहीं सुना था कि somebody who is wishing to have a house of herself doesn't have enough money to buy that apartment,
sea facing apartment, but then she whenever she walks in her current home, which is not that pretty, she always thinks that she's walking in her new room, in her new house. She's starting to collect things, or the paintings or the furniture that she would keep in that apartment. So that is also a technique, self-curated technique, guys, right? Visualization, live visualization, 24/7 visualization. So I think this video helped you, and yeah, that's all about it. I really hope I'm making some difference. Thank you, guys.